everyone, welcome to my YouTube channel. So we are going to continue our chapter Fundamentals of Partnership Firm, and in the last two videos we have started with the practical question, and in this video as well we are going to take one more practical question which is itself a full-fledged question, and in that question I am going to throw some light on some extra point which is very important from exam point of view, right? So without wasting any time, let's dive into the question. And for the question, I am going to put that question on the screen. So read the question with me. X, Y, Z are partners with a fixed capital of 1.5 lakh, 1 lakh 20,000 and 8 lakh respectively. The balance of current account on 1st April 2015 were 8,000 credit balance, 3,000 credit balance and 2,000 debit balance for Z. X advanced 20,000 on October 1, 2015. The partnership deed provided for the following. Interest on capital at 5% per annum, interest on drawing at 6% per annum. Each partner drew 10,000 on 1st October 2015. Next, 20,000 is to be transferred to general reserve account. Lastly, profit and loss is to be shared in the proportion of 3:2:1 up to 60,000 and above 60,000 equally. Net profit for the firm for the year ending 31st March 2016 before above adjustment was 1,15,400. From the above information, prepare the profit and loss appropriation account and capital and current account of the partners. Right? So in this question, they have given you two balances of partners. First is the capital account and the second is the current account. So also they have asked you to prepare both the account in this question. So we are going to prepare the both. Now let's start with the profit and loss appropriation account. The very first thing that you have to write while solving the question is the date. तो जो date हमारे question में given है आप उसको उठा के इधर लिख दोगे, right? After that हम लोग अपने credit item से शुरू करेंगे. सबसे पहले लिखेंगे by profit and loss account. Right? How much profit and loss given in the question? 1,15,400. Right? Now why we have brought this outside? I am going to tell you the reason. So in the very first sentence they have written X advance rupees 20,000 on October 2015. What does it mean? इसका मतलब है जो पार्टनर X है उसने 20,000 रुपए लोन दिया है 1st October को फर्म को, राइट? सो इन दिस केस जो फर्म है वो पार्टनर को इंटरेस्ट देगी. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट. वो जो इंटरेस्ट लोन के ऊपर दिया जाता है इट इज कंसीडर्ड टू बी अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट? तो वो जो इंटरेस्ट होता है उसको हम सबट्रैक्ट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस में से, राइट? सो इन दिस केस आप अपना इंटरेस्ट निकालोगे 20,000 के ऊपर, ठीक है, अक्टूबर से 31st मार्च तक. October, November, December, January, February, March. So there are 6 months of interest you are going to calculate, and the rate of interest that you are going to take is the 6%. Why? Because if nothing written in the question, it is stated in the partnership deed कि आप 6% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. तो आप इसमें 6% के हिसाब से अपना इंटरेस्ट निकालोगे, which is coming out to be 600, right? So simply you are going to subtract that 600 from your profit and loss account balance, and this is going to give you 1,14,800. Right? Now let's move towards the interest on drawing. Right? So for the interest on drawing in the B part, I have told you interest on drawings are 6% per annum. Each partner drew 10,000 on October 1st, 2015. Again उन्होंने आपको बताया कि 10,000 रुपए तीनों पार्टनर्स ने निकाले हैं X, Y, Z on 1st October. ठीक है? तो आप क्या करोगे? इस 10,000 के ऊपर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालोगे from 1st October to till 31st March. Again for the 6th month. तो जब आप 10,000 के 6% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालोगे 6 महीने का, it is going to give you 300 for each, right? X, Y, Z. It is going to give you 300, 300 and 300. Right? Add the 3 and write outside 900. If you are still thinking how we got the 300, so 10,000 plus 6%
the very first item that comes is the interest on capital. So X, Y, and Z. So the capital that they have told you is the 150, 120 and 1 lakh. तो आप जो इंटरेस्ट निकालोगे वो आप अपने कैपिटल वाले की बैलेंस पर निकालोगे. तो जब आप 5% निकालोगे 150 का, 120 का and 1 lakh का, you will get your interest on capital, right? So it is giving you 7,500 for A, for X. For Y it is coming out to be 6,000 and for Z it is 5,000. Add the 3 and write in the outside column, it is giving you 18,500. Right? Now moving forward, the second item that we are going to write on the debit side is your 20,000 is to be transferred to reserve account. Right? So write to reserve account. How much? 20,000. Okay. Now after that we are going to check the item. हमने कुछ चीज छोड़ी तो नहीं है. IOC दे दिया, IOD दे दिया, reserve दे दिया. Right. So this is it. हमने interest on loan को भी consider कर दिया. Now simply you are going to balance your account. Right. If you are not much clear about the profit and loss appropriation account, I would advise you to go back and watch my last 2 videos wherein it will be very clear about the profit and loss appropriation account. Right? Now we are going to balance the account. So your credit side is more than your debit side. So your credit balance, it is coming out to be 1,50,700. Okay? And you are going to write that on the debit side as well, and when you will subtract your debit items, you will get your profit, which is to be transferred to partner's capital account. Profit transferred to capital account of X, Y, and Z. Now, how much you are getting after subtracting? So you are getting 77,200. Divide this in the ratio which is given in the question, 3:2:1. So when you will divide it, you will get 35,734 for X, 33,734 for X, right? 25,733 for Y, right? Then 15,733 for Z, right? Now this is the trick in this question. They have told you capital account का balance and the current account का balance. तो आपका ये जो profit आता है, आप usually इसको capital account में transfer करते हो. But in this case आपको दो account के balance दे रखे हैं. तो ये वाला जो profit है, ये आपका पहले जाएगा current account में. उसके बाद आपका जो balance होगा, उसको हम बाद में consider करते हैं, right? तो आप यहाँ पर लिखोगे profit to be transferred to current account, right? So this is it for your profit and loss appropriation account. Now we are going ahead with your partners account, right? Which is in the case capital account and the current account, right? So without wasting any time, let's get started. Okay. So we have learned about the profit and loss appropriation account for the particular question. Now we are going to continue with the partners account. Now before moving ahead with the question, I would like to tell you कि इस क्वेश्चन में आपको दो बैलेंस दे रखे हैं. एक आपको कैपिटल का बैलेंस दे रखा है और दूसरा आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है. ठीक है? तो जब भी क्वेश्चन में आपको दो बैलेंस दे रखे होंगे, सिंपली आपको दो ही अकाउंट बनाने हैं. एक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, दूसरा आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है. Now what you have to do in case of partners capital account, आपकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड रहेगी. Right? For example, I am going to solve the partners capital account of this question first. So your format for partners capital account is this: X, Y, Z, X, Y, Z. There are three partners. We are going to write partners capital account. Right? आप अपने particulars लिखोगे X, Y, Z. Particulars X, Y, Z. ठीक है?
तो होता क्या है आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब आपको दोनों अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे होते हैं, आप सिंपल इस अकाउंट में अपनी कैपिटल को डालते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितनी कैपिटल दे रखी है आपकी? 150, 120 एंड 1 लाख। 150, 120 एंड 1 लाख, राइट। उसके बाद आप सिंपली अपने अकाउंट को कर देते हो क्लोज, ठीक है। 150, 120 एंड 1 लाख, right? After this, you are going to write this balance carried down 150, 120 and 1 lakh. This is how we close the account. तो आपको अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन दिस क्वेश्चन जो करना है वो सिंपल आपको अपने कैपिटल को रिफ्लेक्ट करना है आपके मेन अकाउंट में। इसका मतलब है आपके दो अकाउंट है, आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हो सब अपने करंट अकाउंट से करते हो, ठीक है। तो आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, जिसका मतलब है एक बार आपने कैपिटल डाली वो फिक्स्ड रहेगी फॉर द ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। नाउ दिस इज इट फॉर योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ जितनी भी एडजस्टमेंट हम लोग पहले अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते थे, अब हम वो सब एडजस्टमेंट करेंगे अपने पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, ओके। नाउ just accept this point and all the transaction we are going to transfer to the current account, right? So let's get started with the current account. Okay, so we have learned about the partners capital account, जिसमें मैंने आपको बोला आप सिर्फ अपनी कैपिटल का जो बैलेंस होता है उसको रिफ्लेक्ट करते हो, उसके बाद इस अकाउंट को सिंपली क्लोज कर देते हो। Now we are going ahead with the current account. तो आप हेडिंग डालोगे अपनी partners current account, ठीक है। एक्सेप्ट योर कैपिटल, आप सारी चीजें को वहां पे ट्रांसफर करोगे अपने करंट अकाउंट में। सो दिस इज योर पार्टनर्स करंट अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट x y z, x y z एंड यू आर गोइंग टू राइट द पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था आपने उसमें अपने कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया था, तो इस क्वेश्चन में आप जो बैलेंस यहाँ लिखोगे वो लिखोगे अपने करंट अकाउंट का बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ फॉर द x and y they have told you 8000 and 3000 and both have the credit balance 8000 and 3000, but for z they have told you 2000 debit balance, ठीक है। हम लोग उसको डेबिट साइड लिखते हैं, सिंपल। नाउ मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन, हम लोगों को क्या करना है, अपने वो सारे आइटम्स को जो हम पहले कैपिटल अकाउंट में डालते थे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, अब हम वो कहां डालेंगे? करंट अकाउंट में। तो सबसे पहले हम लोग अपना आईओसी डालते थे, ठीक है। कितना आईओसी था क्वेश्चन में? 7500, 6000 एंड 5000, ठीक है। आपने अपना कैपिटल लिख दिया, आपने आईओसी लिख दी, उसके बाद हम लोग जो ट्रांसफर करते हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट आपका वहां से आया था? 35,734, राइट, 25,733 एंड 15,733, राइट। नाउ फॉर द जनरल रिजर्व, आप जनरल रिजर्व को अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करोगे बिकॉज़ इट इज टू बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, राइट। नाउ फॉर द डेबिट साइड आप क्या करोगे? अपना ड्राइंग्स लिखोगे। कितनी ड्राइंग्स है? इन द क्वेश्चन दे हैव टोल्ड यू 10000 फॉर ईच, उसके बाद आप लिखोगे अपना आईओडी। आईओडी कितना आया था? 300 फॉर ईच, right? Now you are going to close your account because there are no other items left. So when you are simply going to close your account, you will get your closing balance by balance carried down. So we have calculated our closing balance, which are getting in this case
In this question, you have learned few more items such as your loan, your interest